Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course. इस वीडियो में क्वेश्चन 4 है ऑफ पेपर 1 ऑफ 2024 यूपीएससी आईएएस सीएससी किया जा रहा है. क्वेश्चन है लेट ए 324202 423 बी ए 3x3 मैट्रिक्स फाइंड द eigenvalues and the corresponding eigenvectors of A. Hence, find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of A to the power minus 15, where A to the power minus 15 is equal to A inverse to the power 15. तो सबसे पहले हम eigenvalues and eigenvectors find out करते हैं, then rest of the part करेंगे. So A minus lambda is equal to 0 ये characteristic equation होती है. And we write 3 minus lambda 2 4 2 0 minus lambda 2 4 2 3 minus lambda. इसे एक्सपेंड करते हैं. सो एक्सपेंड करने पर 3 minus lambda into minus lambda. 3 minus lambda के लिए होगा these two which is minus lambda 3 minus lambda minus 4 plus 2 into इसके लिए होगा 2 into value into this minus this value into this 8 minus 2 into 3 minus lambda plus 4 2 into 2 that is 4 this into this that is plus 4 lambda. इसे एक्सपेंड कर लेंगे. This becomes 3 minus lambda into minus 3 lambda plus lambda square minus 4. So this is 3 minus lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 4 plus 2 2 plus 2 lambda plus 4 4 plus 4 lambda. So minus 9 lambda plus 3 lambda square minus 12 plus 3 lambda square minus lambda cube plus 4 lambda plus 4 plus 4 lambda plus 16 lambda. So this comes minus lambda cube plus 6 lambda square plus 15 lambda plus 8 is equal to 0. तो यहाँ से जो lambda की वैल्यूज आती हैं, this is true for lambda is equal to minus 1 because 1 plus 6 minus 15 plus 8 तो 0 आ जाता है. तो 1 minus 1 के लिए ट्रू है. सो लैम्डा प्लस 1 एक रूट हो गया इसका. तो वी कैन फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द टर्म्स. वी राइट इट माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं. दिस इज माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 plus 6 lambda into lambda plus 1 plus 8 lambda plus 1 is equal to 0. So now we take lambda plus 1 common. It is lambda into minus lambda plus 1 plus 6 lambda plus 6 plus 8 is equal to 0. So this becomes lambda plus 1 minus lambda square plus 7 lambda plus 8 is equal to 0. And from here again we get minus lambda square plus 8 lambda minus lambda plus 8 is equal to 0. And factors for this lambda minus lambda plus 1 minus 1 lambda. If we take plus 1 so this is minus lambda plus 8 is equal to 0. So roots are lambda is equal to minus 1 and here we take minus lambda plus 1 and this is so lambda is equal to minus 1 from here and this gives minus lambda plus 1 and minus lambda plus 8. And if we take minus minus common it gives lambda is 1 and lambda is 8. So lambda is equal to minus 1 and 8. These are the roots. So these are eigenvalues and now for each eigenvalue we will calculate the eigenvector. So first we calculate eigenvector for lambda is equal to minus 1. So A minus lambda I is equal to 324,202,423 plus lambda because minus 1 it has been taken so plus 1 and 1 I is 100,010,001. We are adding them so 4 3 plus 1 is 4 2 plus 0 is 2 4 plus 0 so we are adding them 2 1 2 4 2 4. So this is A minus lambda I. Now we have to find out eigenvector. So we apply row operators. R1 we take as R1 upon 4 and it will become 1 1 by 2 and 1
Then we take R2 as R2 minus 2R1. ये जो करंट R1 आई है इसे हम ले रहे हैं. So we can write this R1 dash and we can write R1 dash. So this is 0 0 0 because R2 is 2 minus 2 is 0 and then 1 by 1 is here and 1 by 2. So 1 by 2 into 2 is this 0 and then here 2 minus 2 is 0. Then in R3 minus 4 R1 dash into 4. So this is 0 0 0. So we get a plus 1I into x1 x2 x3 is equal to 1 1 by 2 1 0 0 0 0 0 0 into x1 x2 x3 which is equal to 0 0 0. So we get equations here. Only one equation is there. x1 plus half x2 plus x3 is equal to 0. So x1 is equal to minus half x2 minus x3. So eigenvectors corresponding to the eigenvalue lambda is equal to minus 1 is we can write minus 1. We take x3 0 and x2 as 1. So when we take x3 0 and x2 as 1, this is one of the combination. We may have many combinations. So this is 0 and this is 1 and the vector is like this. And suppose we take x2 as 0 and x3 as 1. In that case we get x3 as 1, x2 as 0. So this is minus 1. x1 is minus 1. Now for lambda is equal to 8, a minus lambda I is equal to 3 2 4 2 0 2 4 2 3 minus 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is equal to minus 5 because we are subtracting 2 and 4 and 0 1 0 and then 4 2 minus 5. Now we apply row operations. R1 is R1 upon 5 which is R1 dash we can say, and this becomes 1 minus 2 upon 5 and 4 upon 5. Then R2 will be R2 into 5 by 36 with minus sign. So now matrix is 1 minus 2 upon 5 minus 4 upon 5 0 1 minus half and 0 18 upon 5 and minus 9 upon 5. So now we make R1 as R1 plus 2 upon 5 R2. We get 1 0 minus 1 0 1 minus half and 0 18 by 5 and minus 9 upon 5. Now we do R3 as R3 minus 18 upon 5 R2. R3 minus 18 by 5 R2. This operation we apply on R3 and we get 1 0 minus 1. R1 and R2 will be same, 0 1 minus half and 0 0 0. So now a minus 8I into x1 x2 x3 is equal to 1 0 minus 1 0 1 minus half 0 0 0 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. So we get three equations. x1 minus x3 is equal to 0. x2 minus half x3 is equal to 0. So we get x1 is equal to x3 and x2 is equal to 1 by 2 x. So हम इसको फॉलो करते हुए वेक्टर लिख सकते हैं v is equal to x3 1 by 2 x3 and x3. अब x3 को 1 ले लें, x3 as 1. So this is 1 1 by 2 and 1. Last part of the question is that we have to find the eigenvalues and eigenvectors of A inverse to the power 15, A to the power minus 15. So here matrix is symmetric and symmetric matrix is invertible. So matrix A is symmetric and invertible. Therefore the inverse of A is also symmetric. Symmetric matrices have real eigenvalues. Symmetric matrices have real eigenvalues. And we can see one more thing, that suppose A V is equal to lambda V. This we know by characteristic equation. So we multiply it by A inverse. So A inverse AV is equal to lambda to scalar. So A inverse V and A inverse A is I. So IV is V is equal to lambda A inverse V. So from here we can write down 1 upon lambda V is equal to
A inverse V। तो ये जो इक्वेशन हो गई, दिस इज टेलिंग अस by this characteristic equation that here A inverse is say B, तो BV is equal to 1 upon lambda V। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी कि लैम्डा अगर A के आइगन वैल्यूज थे तो 1 upon lambda B which is A inverse, this will be inverse, आइगन वैल्यूज will be inverse of the आइगन वैल्यूज of matrix A। So एक प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल गया। Now second property is if lambda is an eigenvalue of square matrix A and X is a corresponding eigenvector, then lambda to the power K is an eigenvalue of AK। So ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। If lambda is an eigenvalue of a square matrix A and X is a corresponding eigenvector, then A to the power K is an eigenvalue of A to the power K। एक और थ्योरम यूज करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स A है एंड लैम्डा उसका आइगन वैल्यू है एंड V जो है आइगन वेक्टर है, तो पावर मैट्रिक्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है थ्योरम एप्लीकेबल है A and V is equal to lambda to the power NV। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं कि वेक्टर सेम ही रहेगा। सो अब कंक्लूजन ये निकला इस सबका कि जो मैट्रिक्स थी A उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं A to the power माइनस टू द पावर 15 और A to the power माइनस 15। उसके आइगन वेक्टर्स A इनवर्स के होंगे 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा ये हमने फाइंड आउट किए हैं। सो 1 अपॉन लैम्डा जो कि -1 एंड 1 अपॉन 8 हो जाएंगे, ये आइगन वैल्यूज होंगे। लेकिन वेक्टर सेम ही रहेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वेक्टर विल बी सेम हेयर। एंड व्हेन वी से पावर की हमने आइगन वैल्यू देखी तो वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक A एंड इन्वर्टेबल है, मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स A टू द पावर माइनस 15 एग्जिस्ट करेगा। देन आइगन वैल्यू अगर लैम्डा थी तो इनवर्स का यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट किया कि आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा होगा एंड वेक्टर जो है V होगा, सेम वेक्टर है। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर पावर मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर अगर हम A टू द पावर K का देख रहे हैं तो लैम्डा टू द पावर K हो, जो कि पावर मैट्रिक्स का। एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी m। एंड देन वी यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड गेट दिस थ्योरम विच इज ट्रू फॉर पावर मैट्रिक्स A टू द पावर n v इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n v। तो यहाँ भी वेक्टर सेम है, सो आइगन वेक्टर्स विल बी सेम फॉर A to the power minus 15। Thank you।